बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की ओर 780 किलोमीटर क्षेत्र में फैले छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीपों का कुल भूभाग 8,293 वर्ग किलोमीटर है। किसी जमाने में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भयानक कैदियों की बस्ती थी, जिसे लोग आज एक नए नाम से जानते हैं। जिन लोगों को प्रदूषण से मुक्ति चाहिए और कंक्रीट के जंगलों से आजादी चाहिए, भीड़भाड़ की जिंदगी से बचना हो, तो उनके लिए अंडमान से अच्छी जगह और कहीं नहीं। उष्ण कटिबंधीय मौसम, चारों ओर हरियाली से भरे भारत के ये द्वीप दुनिया के हवाई द्वीप के अनुरूप लगते हैं। और उससे भी आगे बढ़कर कल्पना से परे, अनछुए, अनदेखे ये द्वीप प्रकृति की एक सुंदर संरचना है, जिसे जीवन में हर व्यक्ति को एक बार जरूर देखना चाहिए। आदिम सभ्यता एवं आधुनिक विचारों के साथ पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर चेन्नई और कोलकाता से लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता और चेन्नई से अलायंस और इंडियन एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच जेट एयरवेज की विमान सेवा रोजाना उपलब्ध है। चेन्नई और कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए लगभग हर सप्ताह जलयान सेवा भी उपलब्ध है। अगर हम प्रकृति के धनी तथा कुदरत के करिश्मों के प्रवेश द्वार पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ ऐतिहासिक और पर्यटक रुचि के कई स्थान देखने को मिल जाएंगे। दूर दूर के प्राकृतिक सौंदर्य एवं शांत या अनदेखे स्थानों पर जाने से पहले समय मिलते ही पोर्ट ब्लेयर शहर की यात्रा पूरी कर लेनी चाहिए। पोर्ट ब्लेयर एवं बाहरी द्वीपों में सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के होटल एवं अतिथि गृह मिल जाएंगे, जिनमें कमरे हर आय वर्ग के लोगों के अनुरूप ही होते हैं। सरकारी आवासों में अंडमान टील हाउस, कारवाइन कोव के निकट हॉर्नबिल नेस्ट, हैवलॉक का डॉल्फिन यात्री निवास आदि आते हैं। यहाँ कई तरह के रेस्तरां भी मिल जाएंगे, जिसमें तरह तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए पोर्ट ब्लेयर का विश्रांति रेस्तरां काफी प्रसिद्ध है। द्वीप समूह के भ्रमण हेतु पर्यटक सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय जाकर सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न द्वीपों पर स्थित सरकारी आवासों के लिए रियायती दर पर आरक्षण की व्यवस्था है तथा उपहार की वस्तुएं और टी शर्ट आदि की बिक्री भी होती है। लोगों का कहना है कि पोर्ट ब्लेयर में रहते रहते ही राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल भी देख लेना चाहिए। 1857 में स्वाधीनता की पहली लड़ाई के बाद अंग्रेजों द्वारा स्वाधीनता सेनानियों को यहाँ लाया गया और बाद में कैदियों की बस्ती बसाई गई। यहीं से आरंभ होती है विशालकाय और भयानक सेल्युलर जेल की कहानी। इस जेल का निर्माण कार्य सन 1896 में आरंभ हुआ और 1906 में यह बनकर तैयार हो गया। केंद्रीय मीनार से जुड़े इसके कुल 7 खंड एवं 698 कोठरियां थीं। यह इमारत गवाह है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की, उन्हें दी गई यातनाओं की। कई कैदियों को तो उम्र कैद के लिए रखा गया था। आज ये राष्ट्रीय स्मारक है और इसमें संग्रहालय भी है, जिसमें कैदियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन और यातनाओं के बारे में दस्तावेज दर्शाए गए हैं। हर रोज शाम को यहाँ पर स्वाधीनता के महासंग्राम की गाथा का जीवंत चित्रण ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एबरडीन बाजार के मध्य स्थित घंटाघर प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की स्मृति में बनाया गया है। यह द्वीप समूह का प्राचीन तथा लोकप्रिय बाजार है। इस बाजार से थोड़ी दूर मत्स्य विभाग का एक मत्स्य संग्रहालय है, जिसमें अनोखे कोरल, 350 किस्म के सागर जीव तथा अनेकों समुद्र जीव जंतु हैं, जिनमें से कई विश्व में दुर्लभ हैं।
भारतीय नौसेना की देखरेख में एक जल जीवशाला है जिसका नाम समुद्रिका है। इसका निर्माण समुद्री जीवों के संरक्षण तथा सागर के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। यहाँ तरह तरह के शंख सीपी तथा सागर के जीव देखे जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित क्षेत्रीय मानव विज्ञान संग्रहालय में द्वीपों में पाए जाने वाले 6 आदिम आदिवासियों के विवरण देखे जा सकते हैं। यहीं निग्रेटो नस्ल के जरावा, ओंगी, ग्रेट अंडमानी और सेंटिनली तथा मंगोल जाति के निकोबारी तथा शोम्पेन के बारे में हर पहलू की जानकारी उपलब्ध है। इस संग्रहालय में आदिवासियों द्वारा तैयार किए गए औजार एवं हस्तशिल्प की उपयोगी वस्तुएं दर्शाई गई हैं। तरह तरह के फोटोग्राफ, रिकॉर्ड तथा उनकी संस्कृति से संबंधित खोज और अन्वेषण के दस्तावेज भी यहाँ उपलब्ध हैं। वन संग्रहालय में यहाँ के वन विभाग के क्रियाकलाप दर्शाए गए हैं। लुप्तप्राय किस्म की लकड़ियों तथा सजावटी लकड़ियों के तरह तरह के नमूने यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ तरह तरह की लकड़ियों की किस्में जैसे पेडॉक, गर्जन तथा पेमा लकड़ी से बनी दस्तकारी की वस्तुएं भी दर्शाई गई हैं। यहाँ एक छोटा चिड़ियाघर भी है जिसमें द्वीप समूह के लुप्तप्राय पशु पक्षियों को दर्शाया गया है। यहाँ मीठे पानी के मगर, श्वेतोदर चील, अंडमानी चील, अंडमानी अजगर, अंडमानी कछुआ, हिरण, कबूतर आदि कई पशु पक्षी देखे जा सकते हैं। उद्योग विभाग के संग्रहालय सागरिका से उपहार और भेंट की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। सीपी के बने गहने तथा सजावटी सामान, लकड़ी और बेंत के फर्नीचर भी यहाँ उपलब्ध हैं। वहीं से दाहिनी ओर खादी ग्रामोद्योग का संग्रहालय है जहाँ खादी के कपड़े, सीपी तथा लकड़ी के हस्तशिल्प तथा ग्रामीण दस्तकारी की वस्तुएं देखी और खरीदी जा सकती हैं। बाजार की भीड़ भरे तनाव से आप मुक्त होना चाहें तो कुछ कदम की दूरी पर ही गांधी पार्क है जहां मन को शांत करने वाले प्राकृतिक वातावरण में बैठने या टहलने का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ बच्चों के आमोद प्रमोद के उपकरण तथा ऐतिहासिक जापानी सूर्य मंदिर और बंकर भी मौजूद है। सुंदर सजे बाग तथा झील में नौका विहार का भरपूर आनंद लिया जा सकता है। चैथम द्वीप एक सेतु के माध्यम से मुख्य द्वीप से जुड़ा हुआ है। इस द्वीप पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन आरा मिल आज भी कार्यरत है। द्वीपों के लोगों की चिरी हुई लकड़ी, गृह निर्माण कार्य एवं फर्नीचर की जरूरतें इसी आरा मिल से पूरी होती हैं। एबरडीन बाजार से 7 किलोमीटर की दूरी पर है कावाइंस कोव। ये स्थान द्वीपों के कुछ सुंदर सागर तटों में गिना जा सकता है जो सागर स्नान और सूर्य स्नान के लिए उपयोगी है। यहाँ बैठकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। सागर तट के पास ही वातानुकूलित रेस्तरां और बार द वेव्स भी है। यहाँ समुद्री जल में आनंद लेने के बाद साफ पानी से नहाने की भी सुविधा है। यहाँ घुड़सवारी का भी आनंद लिया जा सकता है। बाजार के पास ही अंडमान जल क्रीड़ा परिसर है जो पूरे भारत में अपने तरह का एक अनोखा जल क्रीड़ा परिसर है जहां एक ही स्थान पर सबसे अधिक जल क्रीड़ा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें साहसिक एवं सुरक्षित जल क्रीड़ा शामिल है। शानदार वाटर स्कूटर से सैर या स्पीड बोट की साहसिक यात्रा भी यहाँ की जा सकती है। यदि ज्यादा साहस हो तो विंड सर्फिंग भी की जा सकती है। आप परिसर में लगे किसी बेंच पर बैठकर भी वाटर स्कीइंग, पैरासेलिंग और सेल बोट का आनंद ले सकते हैं। परिसर में स्कूबा डाइविंग की भी व्यवस्था है। पोर्ट ब्लेयर की फिनिक्स बे जेटी से बोट में बैठकर सागर तटों के भ्रमण का आनंद लिया जा सकता है। इस हार्बर क्रूज में सागर तट के 7 मनमोहक स्थानों को देखा जा सकता है। करीब 1 घंटे की इस यात्रा में वाइपर आइलैंड भी शामिल है जहां सेलुलर जेल से पहले जेल हुआ करता था। यहाँ ऊंची पहाड़ी पर पुराना फांसी घर भी है जहां कैदियों को फांसी दी जाती थी। फिनिक्स बे जेटी से ही रॉस आइलैंड की भी यात्रा कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ द्वीपों की राजधानी एवं मुख्यालय था।
जगह जगह लगे हुए बोर्ड और सूचना पट्टिकाएं बीते दिनों का इतिहास बांचती लगती हैं। जहां कभी विशाल चर्च, बेकरी, नाचघर एवं मुख्य आयुक्त का आवास हुआ करता था, आज वहां ब्रिटिश कालीन भवनों के खंडहरों को वृक्षों की जड़ें क्रोध से जकड़े हुए प्रतीत होती हैं। यहाँ नौसेना द्वारा स्थापित स्मृतिका संग्रहालय है, जहाँ पुराने दस्तावेज और फोटोग्राफ संकलित हैं। रॉस आइलैंड सामरिक महत्व का स्थान है, इसलिए नौसेना के अधीन है। हवाबल नेस्ट में ठहर सकते हैं। यहाँ 2 अच्छे सागर तट भी हैं। लक्ष्मणपुर तट अतिथि गृह से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है, जिसके चारों ओर घने वन हैं। सीतानगर तट अतिथि गृह से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस रेतीले सागर तट के चारों ओर चूना मिट्टी की भूमि है। नीलद्वीप में प्रकृति के कई करिश्मे देखे जा सकते हैं, जैसे प्राकृतिक पत्थर का यह सेतु। अप्रदूषित वातावरण तथा अछूते सागर तटों के गोद में है हैवलॉक द्वीप। यहाँ पर्यटन विभाग के डॉल्फिन यात्री निवास में ठहरने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ के नीले नीले सागर का नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है। अगर आप साहसिक अभियान में रुचि रखते हो तो डॉल्फिन यात्री निवास से 10 किलोमीटर की दूरी पर राधानगर समुद्री तट चले जाइए, जहां सूर्य की किरणों, रेतीले तट और स्वच्छ समुद्र का आनंद उठाया जा सकता है। यदि आप दुनिया भर के देशों से आए पर्यटकों की भीड़भाड़ से दूर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उपाय है। आप अंडमान ट्रंक रोड द्वारा 12 टांग मार्ग से मध्य एवं उत्तर अंडमान की यात्रा कर सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर से डिगलीपुर तक आपको करीब 290 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मार्ग के स्थलों से गुजरते हुए आप हजारों साल पहले का जीवन महसूस करेंगे। साथ ही आदिम सभ्यता के दर्शन भी हो सकते हैं। आपको घने वनों और जरावा आरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरना होगा। इस मार्ग पर सभी वाहनों के लिए बुश पुलिस से सुरक्षा गार्ड दिए जाते हैं। रंगत मध्य अंडमान का सबसे बड़ा नगर है। पोर्ट ब्लेयर से समुद्री मार्ग द्वारा इसकी दूरी 90 किलोमीटर है और सड़क मार्ग द्वारा 170 किलोमीटर। पोर्ट ब्लेयर से सड़क मार्ग द्वारा 6 घंटे में यहाँ पहुंचा जा सकता है। पर्यावरण प्रेमी पर्यटकों के लिए ये बड़ा उपयोगी स्थल है। प्राकृतिक संपदा के धनी रंगत से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कर्ट बेस्ट बे। यहाँ पर पर्यटन विभाग का अतिथि गृह हॉक्सबिल नेस्ट है, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए शांत आवास है। यहाँ के सागर तट पर मौसम में कछुए अंडे देने आते हैं। यहाँ मछुआरों के गांव भी हैं, जहाँ प्रकृति की गोद में ये लोग शांति से रहते हैं। इससे पहले रंगत से 10 किलोमीटर की दूरी पर और मुख्य सड़क से 10 मिनट चलकर आमकुंज तट पहुंचा जा सकता है, जहां एकाकी और शांत वातावरण है। यहाँ का सागर तट आमोद प्रमोद की अच्छी जगह है।
सप्ताह में 2 बार बोट उपलब्ध रहती है। एरियल बे जेटी से बोट किराए पर लेकर रॉस और स्मिथ आइलैंड जा सकते हैं। इस यात्रा में करीब 1.5 घंटा लगता है। वन विभाग से शुल्क की अदायगी कर यहाँ जाने की अनुमति ली जा सकती है। रास्ते में लिटिल रॉस द्वीप भी देखा जा सकता है। इस आइलैंड के एक और रेतीले तट हैं जहां पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। दूसरी ओर पथरीला तट है जहां से रॉस और स्मिथ आइलैंड साफ दिखाई देता है। ये द्वीप प्रकृति की सुंदरता के नमूने हैं, जहां सुनहरे रेतीले तट हैं और अविश्वसनीय 50 मीटर की दूरी पर ही दूसरी ओर हरे भरे घने वन हैं। यहाँ पक्षियों के कलरव को सुना जा सकता है और हवाओं के झोंके आप हाथों से छू सकते हैं। सागर गीत गाते हैं, मानव खो सा जाता है जब नीले सागर की लहरें सूर्य चुंबित तटों से होकर गुजरती हैं। रॉस और स्मिथ आइलैंड रेतीले मार्ग से जुड़े हैं जो भारी ज्वार के समय ही अलग होते हैं। अंडमान के द्वीपों की एकमात्र नदी कल्पांग भी यहीं के सैडल पीक से निकलकर डिगलीपुर के बीच से गुजरती है। डिगलीपुर से रवाना होने से पहले रामनगर सागर तट भी देख लेना चाहिए। ये काली घाट से 16 किलोमीटर की दूरी पर है और करीब 15 मिनट घने वनों से होकर गुजरना पड़ता है। तट बड़ा ही शांत है, बड़ा ही लंबा और अछूता, जो लहरों से भी अछूता लगता है। इस तट के चारों ओर केवड़े के पेड़ और घने वन हैं। अब लिटिल अंडमान की यात्रा पर चलते हैं, जहां का मुख्यालय हट बे है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर से जहाज द्वारा 8 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहाँ अंडमान लोक निर्माण विभाग का एक अतिथि गृह है। यहाँ का झरना बड़ा प्रसिद्ध है, जहाँ की हवाएं ठंडी तथा वन घने पाए जाते हैं। यहाँ वन तथा बागान विकास निगम का हाथी प्रशिक्षण शिविर है, जहाँ हाथियों को विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। अतिथि गृह से 14 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर सागर तट है, जिसकी रेखदेख वन विकास निगम करता है। यह सुनहरा और श्वेत तट इतना साफ और अछूता लगता है जैसे अभी अभी ही इसकी उत्पत्ति हुई हो। यहाँ टिन के डिब्बे, प्लास्टिक के बैग, तेल के कचरे या नारंगी के छिलके नहीं दिखेंगे। आवाज लगाते सागर या आपके अपने पदचिन्ह ही दिखेंगे। यहाँ रेत के टीलों पर बादल को उतरते देखा जा सकता है। यहाँ रेड ऑयल पाम के बगीचे भी हैं, जहाँ पाम के बीजों को इकट्ठा कर कारखाने ले जाया जाता है। यहाँ कारखाने में तेल निकालने की प्रक्रिया भी मनोरंजक होती है। हटबे से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही निकोबारी आदिवासियों को बसाया गया है, जहाँ उनके जीवन को देखा जा सकता है। समुद्र के किनारे बड़े मनभावने हैं। दूर दूर तक फैले सुंदर रेतीले तट ऐसे लगते हैं जैसे समुद्री थपेड़ों से ये मिट्टी को बचाते हैं। पर्यावरण के अनुरूप पर्यटन ही अंडमान के दिल की धड़कन है, जो जीवन को एक नई अनुभूति देता है। यहाँ बहुत कुछ देखने एवं करने को है। शहरी जिंदगी और भीड़ से बचना हो तो दुनिया के इस स्वर्ग पर आना होगा और खुद को महसूस कीजिए। मन को उड़ान दीजिए, आराम कीजिए। सूर्य की किरणों को आत्मसात करें, पृथ्वी पर शांति महसूस करें और ऐसी यादें लेकर जाएं जो जीवन भर साथ रहें। This documentary is dedicated to those unsung heroes of 1857, the first War of Independence, and the great revolutionaries who followed them to the Andamans, to be incarcerated in the cellular jail, to suffer inhuman
and barbaric atrocities for the freedom of their motherland. And those martyrs who made it possible for us to live with our heads high as free citizens of an independent country. Indian independence movement has been a saga of struggle, courage and determination to wrest independence from the British colonial rule. In that long drawn-out fight for freedom, many Indians have sacrificed their lives. There is no parallel history to the history of human endurance, history of inhuman cruelties and barbarities on educated youths of India who fought for the emancipation of their country. The history of cellular jail and freedom movement is the history of their brave defiance and passive resistance in the face of unspeakable sufferings. The British conquest of India was complete in 1856. Ever since the establishment of the British rule in India, it met occasionally with resistance from local leaders, peasants and tribals. Other dispossessed rulers, zamindars and chiefs, but these resistance were confined to smaller regions. The War of Independence against the British by the Indian rulers started from as early as 1757. Nawab Siraj-ud-Dawla of Bengal waged war against Lord Clive. Tipu Sultan defeated the British many times and checked British expansion in south. Rani Lakshmi of Jhansi fought bravely against the British. Nana Sahib and his brave and able leader Tantia Tope kept the British troops engaged for 2 years in central India and Rajputana. The great Maratha leader, Nana Fadnavis, led the first Anglo-Maratha War. During 1806, the company Sepoy revolted in Vellore. And in 1824, the 47th Native Infantry revolted in Barakpur. There have been scores of minor revolts against the British in different parts of the country between 1765 to 1856. But the mighty revolt of 10th of May 1857 that sparked in Meerut and assumed national character was the first war of independence of New India. Sparked on 9th May 1857 when 85 sepoys of native infantry were convicted for refusal to accept the greased cartridge in Barakpur. Fanned by the blood and sacrifices of the martyrs, the revolt took the form of a gigantic fire which engulfed the entire nation. This was the fire which never extinguished. The sepoys made assault on Delhi, and Delhi was captured. 80-year-old Bahadur Shah, the last Mughal emperor, was proclaimed the Emperor of India. But soon after the widespread challenge and the initial setback, the British reinforced themselves and were able to suppress the revolt and arrest the revolutionaries en masse. And Mangal Pandey, who led the revolt against the British, became the first martyr. Delhi was recaptured by the British in September 1857, and Emperor Bahadur Shah was arrested and taken prisoner. He was tried and exiled to Rangoon jail in Burma, where he died in the year 1862. Meanwhile, the British government in India had arrived at the decision to re-establish the penal settlement in the Andamans after it was abandoned in 1796,
which was considered a convenient place for confinement of the prominent rebels away from the ordinary convicts in the Indian jails, lest they should infest them with revolutionary ideas and infuse in them the spirit of hatred against the government. Thus, the first Indian War of Independence of 1857, termed as Sepoy Mutiny by the British, supplied the first batch of political prisoners lodged in the Andaman jail. On 10th March 1858, the first batch of 200 freedom fighters reached the Andaman, with Dr. J.P. Walker, the first jail superintendent of the penal settlement, 4 European officers, an Indian overseer, 50 brigadesmen, and 2 native doctors. Subsequently, by the end of 3 months, on 16th June 1858, the position of prisoners transported in Andaman increased to 773. And soon, the Andaman acquired the notorious sobriquet of Kala Pani. The name Kala Pani was to infuse a sense of fear and awe. When the freedom fighters arrived, there was no adequate arrangement for their boarding and lodging. Immediately on arrival, the convicts were sent to clear Chatham Island. But due to shortage of drinking water on the island, Dr. Walker sent 3 gangs, each comprising of 25 convicts, to Ross Island for felling of trees and clearing operation for settlement. The task of cutting and clearing the jungles was given to the revolutionary freedom fighters. They were also employed to cut bamboos and bring thatching and to make huts for themselves. Most of these prisoners belonged to the rich and well-to-do sections of the Indian society, zamindars, nawabs, writers, poets, etc., normally dependent upon their retainers for manual jobs. The freedom fighters were subjected to soul-crushing labor in hostile conditions and were beaten mercilessly for the slightest lapse. The hardship and toil which they were subjected to were of severe nature, which were at times quite unbearable. The revolutionaries preferred death to such pathetic existence and were prepared to attempt an escape. On the 4th day after arrival, Narayan, convict number 61, attempted escape from Chatham by swimming to the mainland. He was made to alter his course by being fired at and was captured by a boat's crew, convicted for sedition and escape, and was executed on Chatham Island. On the same day, convict number 46 suffered death by hanging himself at a secluded spot of Ross Island. When the tortures inflicted upon them became unbearable, the prisoners made desperate plans to escape. On 18th March 1858, 21 freedom fighters escaped in rafts from Ross Island, and on 23rd March again, 11 convicts escaped from Ross. The incidents of escape continued even after the naval guard was doubled. On 17th April and 22nd April 1858, more convicts escaped. 1/3 of the whole number of convicts got away within 51 days after arrival in the month of March and April. 228 convicts had escaped, 88 were recaptured, and out of them, 86 were executed the same day. The rest 140 uncaptured were never heard of. They were either massacred by the Aborigines or fell victims to starvation or disease. The government was very worried about the escape cases. The cruelties inflicted on the political prisoners exceeded the limits of their endurance, which led them to adopt desperate measures to free themselves by force. About 200 Punjabi convicts made a plot to siege power in the settlement of Port Blair by force.
On the 1st of April 1859, the conspirators attacked Walker, but he survived the attack because of the timely intervention of an Indian overseer and gangsman. After this incident, the tortures inflicted by Walker increased, and the prisoners were handcuffed in pairs, and these handcuffs were never removed. On the other hand, the hostile attitude of the aboriginal tribes Andamanese towards the British and the freedom fighters whom they found occupying their homeland continued, and the freedom fighters were often left to fend for themselves without any kind of protection. The act of organized resistance against the British reached its climax on 17th May 1859 in what is known as the Battle of Aberdeen. This battle of liberation was fought to oust the British from these islands by the great Andamanese and liberate the land that belonged to them. Fortunately for the British, an escaped convict named Dudhnath Tiwari, who had escaped from Ross Island on 23rd April 1858, who was treated kindly by the Aborigines and lived with them for about a year, came to know about the preparations going on for the attacks on the British. He left the camp at night and arrived at Aberdeen and informed about the attack, which gave the British time to make arrangements for the defense. Meanwhile, in Viper Island, which was occupied on the 8th October 1858 by Dr. Walker, the construction of a jail building, which was initiated by Colonel B. Ford in 1864, was completed in the year 1867. It was the first ever jail to be built in these islands under the penal settlement for incarcerating the convicts for enforcing a strict discipline in the penal settlement. Convicts found guilty of the settlement rules were put in fetters and chains together and were made to work with their fetters on. It was therefore called Viper Chain Gang Jail. The chain gang laborers were put on hard labor of wheat grinding and coir pounding. All the convicts on their arrival at the Andaman were kept in Viper Jail for a month in order to witness different forms of punishment. The flow of the freedom fighters to Andaman continued uninterrupted. The year 1863 to 1865 witnessed a series of trials in India by which all the principal leaders of the powerful Wahhabi revolt were arrested, and many were transported to the Andamans between 1865 to 1871. The Kuka, or the Namdhari movement that was started by Guru Ram Singh on 14th April 1857, was in full force in 1871. The movement had spread in all parts of Punjab, as well as other states, and threatened the British government. In 1871, many Namdharis were arrested and hanged, and in 1872, 66 Kuka rebels were tied to the mouth of cannons and blown to pieces, and some were sent to the Andamans. On 8th February 1872 occurred an incident in the Andaman that shocked the British Empire. Lord Mayo, the then Viceroy of India, was killed by one Sher Ali, a Pathan convict from the northwestern frontier in the Andamans. The convict Sher Ali was condemned to death and hanged in the Viper gallows on 11th March 1872. The Maharaja of Jagannath Puri, Gajpati Bir Kishore Singh Dev, was brought here on transportation, condemning him for a term of life imprisonment in 1879, concerning his involvement in helping the rebels in the First War of Independence, 1857. He was assigned wheat grinding, extracting oil from crushing copra. Consequently, he succumbed to death within a month in 1879. Vasudev Balwant Phadke organized an armed revolt in 1879 against the British in Maharashtra. After his arrest, he was sent to Aden, and his 14 companions were sent to penal transportation to Andamans.
Tikendrajit Singh, the Maharaja of Manipur, led an anti-British uprising in Manipur in 1891. During this revolt, many British officers were openly executed by the Manipuris. The uprising was suppressed, and many leaders, along with the Maharaja, were executed, and some were transported to penal settlement in Andamans. By the close of the 19th century, the Andamans was flooded with the freedom fighters and mutineers. The settlement grew in size. By this time, the convicts, who were either murderers and had escaped the death penalty, or habitual criminals convicted of more heinous offences against persons and property, were also transported to Port Blair from all parts of India and Burma. They were all hardened criminals between the ages of 18 and 45. By 1868, the number of convicts increased from 3,294 to 6,965. The authorities found it difficult to enforce discipline in the settlement. Thus, the C.J. Lyall and A.S. Lethbridge Commission was appointed in 1890 to study the penal settlement in the Andaman and make recommendations. Their view was that confinement within the walls of an Indian prison was a much more severe form of punishment than transportation to the Andamans. They recommended that the convicts in the Andamans should be confined during the first 6 months in solitary cells in a jail to be built specially for the purpose. And this was the genesis of the construction of the notorious cellular jail. Thus, the construction of the cellular jail in Port Blair began in 1896 at Atlanta Point by the Andaman and Nicobar Manual Settlement Order number 423 dated 13 September 1893. The Government of India has ordered the building of a cellular jail at Aberdeen to accommodate 600 prisoners at an estimated cost of 5,17,352 rupees, cash expenditure 95,881 rupees. Mr. McQuillan, sub-engineer, is to be in charge of it in addition to his other duties. Based on Quaker Jail in Pennsylvania, it was a new human concept in prison designs, one man to one cell. Convicts were building their own prison, carrying heavy loads, stones, and hacking the undergrowth. Prisoners were forced to put in hard labor. To accelerate construction work, about 600 convicts from different stations like Viper, Navy Bay, Phoenix Bay, Brichganj, and Dundas Point, etc. were engaged. About 20,000 cubic feet of local broken stone was used, while building materials were also brought in from Burma. The lime used in the mortar was obtained by burning raw coral from the innumerable coral reefs around the island. Some 30 lakh bricks made at Dundas Point and Navy Bay brick kilns were used to construct the jail. The system of separate confinement was started in 1897, when the construction of the jail was still in progress. The construction took 10 long years, and finally, the jail was completed in the year 1906.
गत 26 दिसंबर 2004 को आई प्रलंकारी सुनामी लहरों ने द्वीपों में ऐसा तांडव मचाया जिससे जनजीवन छत विछत होकर रह गए। आप अपनी स्क्रीन पे ननकौरी द्वीप देख रहे हैं। कचाल में आई सुनामी लहरों ने तटों, स्कूलों व घरों को नील लिया और कई लोग बेघर हो गए। मदद की आस में आते जाते हवाई जहाज़ों को एकटक निहार रहे हैं। मौके पे मौजूद प्रशासनिक कर्मचारी और सेना के अधिकारीगण मदद पहुंचाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। रहने वाले सर, ये कचाल आइलैंड है। दूरदर्शन के संवाददाता रुद्रनाथ सन्याल ने मौजूद पीड़ितों से बातचीत की। सर काफी मारे गए सर, मैक्सिमम ट्राइबल्स भी गए सर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स गए हैं सर। जेट्टी आपका जो पीडब्ल्यूडी का एरिया सब चले गए सर। ये आरोन में आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया, जान सिंह, झूला, होंदा, ये सारा एरिया। ये कच्चल है ना? कच्चल है। आप कच्चल के रहने वाले हैं? मैं कच्चल के रहने। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर सर। अच्छा, बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? जी उस दिन सर करीब 6:30 बजे आसपास भारी ताकत से, मतलब जोर से भूकंप हुआ सर। उसके बाद पानी कहाँ तक आया था? पानी सर कपंगा एरिया, जो सीसोर एरिया है सर, बहुत दूर, जेट्टी से लेकर 4 किलोमीटर तक अंदर पानी आ गया सर। काफी लोग हमारे। कितना ऊंचा पानी आया था? लगभग सर 20-25 मीटर ऊंचा में पानी आया था सर। अभी क्या हाल है? पानी कहाँ तक है अभी? अभी सर पहले जैसा था वैसा नॉर्मल जगह में है सर। अच्छा, कच्चल में रिलीफ ठीक ठाक पहुँच रहा है? जी सर, एयरफोर्स की तरफ से जो नेवल जहाज में सब सामान आ रहा है सर। कोई बाहर के एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट वाले कहते हैं वो लोग भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सर यहाँ में गवर्नमेंट सर्वेंट भी काफी गए सर। गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं? गवर्नमेंट के बाहर कोई नहीं आ रहे हैं रिलीफ के लिए? नहीं सर, रिलीफ के लिए सर बाहर वाले नहीं है सर, अभी तक नेवल खाली गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं? जी सर, नेवल। आप बेटा बताओ, आप क्या नाम है आपका? पंडित सेल्वम। हाँ, पंडित सेल्वम। अच्छा, क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ पर ठीक नहीं है सर, बहुत ही। अच्छा, अभी रिलीफ आने लगा है? जी 3 दिन के बाद में सर, 3 दिन के बाद में आने लगे सर। अच्छा, रिलीफ 3 दिन के बाद आने लगा है सर, उसके बाद में कोई आता पता नहीं सर। लेकिन अभी आ रहे हैं? अभी ठीक है सर, आ रहे हैं। अच्छा, अभी लोग फंसे हुए हैं कच्चल में, ऐसा सुनने को आया है? जी कोई वेस्टिव एरिया में कोई 17 आदमी बचे हुए करके सुनने में आया सर। अभी यहाँ का अपना फोर्स गया सर लेने के लिए। संयुक्त कमान के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल BS ठाकुर ने हमारे संवाददाता को बताया कि there are 17 people who are reported to be live. There were total 19. 2 of them have managed to reach here. Now we are trying to organize rescue for those 17 people. And what about the relief work? Otherwise, is it going on as you had planned? Yes, what I find here that relief work is quite satisfactory. They have got adequate stocks. There may be shortages of 1 or 2 items which we will make up. They were saying that initially there was some delay, but has that been made up now? You have seen the damage, you have seen the jetty. Right. There is no sign of jetty. Right. So now of course things are picked up and they've got stocks here. And we were told that you are depending also on local initiatives, like these donkeys are being tested to service got from Port Blair. Yes. You see, unfortunately local donkeys here were affected by the tsunami. They got destroyed. So we are bringing donkeys all the way from Port Blair.
so that they can be used to land things here on the island. Thank you very much. कमांडर आईएनएस कारदीप एसएस मान ने बताया, I was the person on the site that day when the thing took place. It started at 6:30 in the morning. There was earthquake when all people came out, and we also came out. There was not damage much because of earthquake. There were only few tanks which had fallen down. Tell us what happened after the tsunami struck. After about 1 hour, we saw the water level rising up at the various places. All the jetties started submerging. The water level, all the lifebuoy points all had submerged, and the water was just gushing inside. Okay. We are told that you took help of these local dungis also. So what happened? I immediately with my team rushed to the jetty and walked into the jetty with waist deep water. That was first wave, and moment we went, the water went back, so we climbed onto that and sent our boats which were there immediately to pick up the people from Trinket, Champion and the nearby villages. So first day itself we picked about 20-25 people from there. No, but there are reports that these, a lot of people were not rescued and they were rescued much. There was a story of a girl. These are all wrong stories. As far as Kachal and Tarasa, these far off islands concerned, this story must be true. But whatever Trinket, Kamorta, Nankavri, these three islands, whatever bodies were around, we picked up itself on 26th and 27th. And what about this girl we are talking about? The girl which you are talking about was picked up by the sailor of INS Kardip on 27th itself and brought to Kamorta Hospital, and she was frail and party with her relatives, and whatever news Aajtak is giving is... What about this girl? This girl was picked up by sailors of INS Kardip on 27th itself. So, but there are reports that, the girl was not rescued and that she was left alone. These are wrong reports. She was brought to Kamorta Hospital on 27th itself, and her relatives were there with her. And Dr. Naresh Lal, who is in charge of Kamorta Hospital, also knows the girl. And because of lack of communication between Kamorta and... But how are these reports generating? There's a lot of criticism at so many places. These all reports are being self-generated from Port Blair. Only the Sentinel went... But by vested interests, segments of the media or what? That I can't say, but Sentinel had come here, and they had taken certain people, on 200 people, back to Port Blair, and these are people who are spreading these rumors. Sentinel is a ship. Sentinel is a merchant vessel ship which had come with provisions, but while going back, she had taken about 200 survivors from Kamorta, and these people went and spread the rumors about this girl. Okay, some vested interests, you mean? And what about the... This boy had gone in this merchant vessel, and along with the donkeys, they picked up the girl. आपका क्या नाम है? अशोक कुमार पंडा. I am POH from INS Kardip. अच्छा, आपका क्या नाम है? SK सिंह. अच्छा, INS Kardip. अच्छा, आप लोग अभी सिवीज में हैं? Yes, civies में. अच्छा, तो ये रिलीफ वर्क के लिए? ये रिलीफ वर्क. तो कैसा रिलीफ वर्क चल रहा है? कोई कह रहा है कि ये बच्चे को रिलीफ नहीं दिया गया, रेस्क्यू नहीं किया गया. आप लोग पहला दिन क्या वो बच्चे को बचाया था? पहले दिन हम लोग पिलपिलो एक आइलैंड है, यहाँ से थोड़ी दूर पे, मतलब कमोटा से, हम सीओ साहब के ऑर्डर से गए कि हम लोग यहाँ पर रेस्क्यू करना, जितने भी जो मेडिकली अनफिट जिनको चोट लगी है उनको मैक्सिमम लेके आके. तो वो लड़की को एक्चुअली चोट लगा था बहुत ज़्यादा बुरी तरह. तो उसको हम लोग लेके आए थे कमोटा में, यहाँ पे मेडिकल में हम लोगों ने दिया उनको. अच्छा, और आपने क्या किया? हमने उसी लड़की को देखते ही चोट लगा हुआ था, उसको जिनको फर्स्ट एड का फर्स्ट जरूरत था, जिनको मेडिकल असिस्टेंट का जरूरत था, हमने उन्हीं को फर्स्ट पिकअप किया, रेस्क्यू किया. उसके बाद कमोटा आइलैंड हॉस्पिटल में लाके. बात बताएंगे, लोग कह रहे हैं कि एनजीओ बहुत यहाँ प्राइवेट वाले यहाँ आए हैं, यही लोग काम कर रहे हैं. और क्या आपने कुछ एनजीओ देखा? मैंने तो अभी तक देखा नहीं. आपने कोई देखा कि जो एनजीओ कोई सर ये सब डिस्टेंट आइलैंड में काम करते हुए? नहीं, यहाँ पे जो है मैं कच्छल आइलैंड में हम जो खड़े हैं, तो आप पहला बार आए हैं, क्योंकि फर्स्ट यू आर द फर्स्ट मैन टू रीच दिस प्लेस. यहाँ पे कोई नहीं आया आइलैंड के? कोई अभी तक नहीं आया. सिंस फर्स्ट